we are going to explore our another poem, and the name of that poem is Father to Son. Here is one interesting fact that this poem is written by Elizabeth Jennings. She is female, and here she describes and show the relation between father and son. So, Elizabeth Jennings is a very famous poem writer, and here she described the feeling and relationship between a father to son, how the father and son between a generational gap, how they communicate, how they feel, what is the emotions between them. All these things are described here, so we will be go through it. Okay. So before taking that, before moving forward, I just want to here describe some word meaning and poetic devices. Then we go forward and then we again revise this thing. Here the word like prodigal. The meaning is wasteful. Means someone who spends money or just wastes the time and money. That person is called prodigal. Prodigal. Here silence word is used, and here the meaning of silence is not like a complete silence, quietness. Here the meaning of silence is lack of communication, means the gap between the father and son communication, that here described the word by silence. And the next word is forgive. To excuse mistakes, means the ignores the mistake and just to forgive that mistake. Then the next word is half grown. Half grown means the developing stage, still someone who is in their developing stage. So, and the poetic device is metaphor, illustration, symbolism, repetition, and the tone is sad, helpless, emotional, and like emotions, so many emotions, desire. These type of tone are used here. So now we move forward. The first stanza says, I do not understand this child, though we have lived together now. Now here the poet described that thing. The father told this thing, I do not understand this child. मैं इस child को समझता ही नहीं हूँ. I do not know that child. I can't understand that child. Though we have lived together now. Even I do not understand my child. Still we are live in the same house for the years. हम सेम हाउस में इतने टाइम से रह रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी मैं अपने चाइल्ड को नहीं समझता हूँ. In the same house for years, we are still, means father here said describe their emotion like I do not understand, I do not connect, I do not feel the emotions of that child. Although we are living in the same house from years, means till the childhood to till now, from the childhood to till now, they both live in the same house, but still there is so much communication gap, silence, communication gap, and emotion gap between them. These three lines describe that thing. In a same roof they are living, but still there is a communication gap between them. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, and now he want to try to build a relationship. He wants here. The father wants to try to build a relationship between feeling, emotions between father and son, and father to son, because just like when the son was small, when the son in their childhood, in his childhood, जब वो बच्चा अपने childhood में था, वैसा relation यहाँ पे father दोबारा create करना चाहते हैं, दोबारा से reborn करना चाहते हैं, rebuild करना चाहते हैं. Nothing of him, so try to build a relationship from how he was when small. Here he want to recall that relationship when he was small, when the child was small, and the relationship, the bond they share. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो वो बॉन्ड शेयर करते थे जब वो छोटा था, वो दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं. Yet have I killed, but I recognize that thing and then rebuild that relationship. That was now is totally blank, totally vanished, totally killed. Means वो अब totally, yet अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है, वो vanish हो गया है, वो relation जो बचपन में था, वो bond था जो बचपन में, वो अभी हमारे बीच नहीं है, तो मैं वो bond बनाना चाहता हूँ, build करना चाहता हूँ. The next stanza said,
the seed I spent or sow, it were. Here the meaning of seed is represent like father efforts. Means the here the son is a seed. Like here father upbring his son with with so much effort, so much emotion, so much of other things also. So here the seed represent the father's effort. I spent or so it were. It will. The land is his and none of mine. But now he feels the land is totally his. He is totally independent. He is totally independent. His thought is totally independent. There is no connection between the father and the son. There is no emotional and mental connection between them. So here father said this thing. He want to spend some time. He want to मतलब वो देख रहे हैं द सीड आई स्पेंड और सो जो उन्होंने सीड मतलब एक छोटा सा प्लांट की सीड होती है ना हम लगाते हैं उस प्लांट को भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे बढ़ रहा है कैसे क्या तो यहाँ पे तो फादर अपने खुद के सीड मतलब बेटे को बता रहे हैं हेयर सीड रिप्रेजेंट द चाइल्ड ऑल्सो लाइक कि वो अपने चाइल्ड को उन्होंने बचपन से अपब्रिंग मतलब उनको धीरे धीरे बड़ा किया उसको बड़ा किया लेकिन अब उनको वो चाइल्ड नहीं दिखता है जो सीड उन्होंने लगाई थी जो सीड एफर्ट्स उन्होंने डाले थे वो चाइल्ड अब वो नहीं है नन ऑफ माइंड वो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरा चाइल्ड है जो मैंने बचपन में जो मेमोरीज क्रिएट की थी जो बॉन्ड शेयर करते थे वो बॉन्ड अब टोटल वैनिश हो गया है तो मुझे ये अपना चाइल्ड अपनी लैंड अपना वही सीड नहीं फील हो रही है वी स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर नाउ देयर इज नो whenever we have no emotional connection so what we do we have not that much of things to talk about automatically so here father described this thing also like we talk about like a stranger जैसे एक stranger से बात करना hello hi how are you what are you doing that's it only that much of talk they are just एक्सप्लोरिंग सो यहाँ पे सिर्फ वो वही बता रहे हैं कि जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर वो कोई इमोशंस कनेक्ट इतना नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिकेशन गैप जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप द होल पोएम डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन गैप बेसिकली सो हियर ऑल्सो द कम्युनिकेशन गैप mainly the cause of communication because of the communication gap we talk like as strangers कि हम सिर्फ strangers की तरह बात करते हैं कि hello hi bye that's it that's enough there is no sign of understanding in the air automatically when there is no communication there is a emotional gap there is a communication gap then the atmosphere become also so subtle so here he described that thing the fathers describe that thing there is no sign of understanding in the air जो हमारा एटमोसफियर है जो हमारा एनवायरनमेंट है जो हमने घर के अंदर क्रिएट कर रखा है वहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग कोई भी इमोशनल हमारा साइन नहीं है हम दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं है द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन एंड yet what he loves I can't share here he described that this child is mine means here he described the physical and the mental qualities like he is my own child यहाँ पे वो describe करे कि उनका खुद का बच्चा है लेकिन still yet despite of this thing still what he loves I can't share जो भी वो ideas क्या उसको पसंद है क्या what उसको जो भी उसको like है dislike है ये सारी चीज़ें उसको उनके फादर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं ऑल्दो कि बायोलॉजिकली फिजिकली मेंटली ये उन्हीं का चाइल्ड है ही एक्सेप्ट दैट थिंग इन फर्स्ट लाइन देन आफ्टर ही सेड कि ये सब होने के बावजूद ही कांट अंडरस्टैंड द इमोशंस कांट अंडरस्टैंड द आइडियाज कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स ही लव मीन्स क्या पसंद नापसंद ये सारी चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल returning to his father's house the home he knew rather than see him make and move his world now silence around us here the meaning of silence is lack of communication means हमारे दोनों के बीच में क्या होता है lack of communication है silence है जैसे हमने environment वाला भी पढ़ा ना कि like there is no sign of understanding in the air में कोई understanding नहीं है कोई emotions नहीं है हम एक दूसरे के share जो thoughts हैं वो हम like dislike नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे बीच में क्या क्रिएट हो रहा है साइलेंस क्रिएट हो रहा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट हो रही है
I would have him prodigal returning to his father's house, and he wants to just move from that his own world. Here, father wants like his son come back to his own house, means वो दोबारा से वो घर क्रिएट कर पाए, दोबारा से वो उस हाउस में अपने बच्चे को लेके आ पाए कि जिसमें वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा ना, जो वो बिल्ड करना चाहते हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरी है उसकी, वैसा रिलेशन जो चाइल्ड जो बचपन में था वो चाइल्ड उस टाइप का रिलेशन वो बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी वो वही चाह रहे हैं कि वो दोबारा से उन अपने उन फादर के घर में आए, उन फादर के घर में आए जो सिर्फ साइलेंस क्रिएट ना हो, वहाँ पे क्या क्रिएट हो, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो, और ये जो वेस्ट अपने इंडिपेंडेंट माइंड, इंडिपेंडेंट वर्ल्ड जो उसने बना रखा है उस सब से बाहर आके वो एक फादर से कनेक्ट कर पाए, ऐसे घर में वो वापस आए, ऐसा घर वो बनाना चाहते हैं। रेदर देन सी हिम एंड मेक मूव हिज ओन वर्ल्ड, कि अपने ओन वर्ल्ड से वो मूव करके जो उसका इंडिपेंडेंट वर्ल्ड उसने बना रखा है चाइल्ड ने, वहाँ से मूव करके हम दोनों एक बॉन्ड शेयर कर पाए, एक इमोशनल बॉन्ड, एक फिजिकल, एक इमोशनल बॉन्ड, एक मेंटल बॉन्ड, एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड हम एक दूसरे से शेयर कर पाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, एंड हियर ही डिस्क्राइब दैट थिंग कि वो जो पुरानी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितने भी मतलब नॉट पर्टिकुलरली मिस्टेक, मतलब पुरानी जितने भी जो डाउट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं पर्टिकुलरली, हियर ही जस्ट फॉरगिव द differences between them, so he wants to forgive all that differences, all that unemotional bond he wants to create, वो ये सारी चीजें वो भूल के he wants to create a new bond, जो एक सॉरो से लेके एक न्यू लव तक बॉन्ड जो क्रिएट हो रहा है उसको वो शेप देना चाहते हैं। मतलब उनके माइंड में ऐसा है कि वो जो मेनली इसका पूरे स्ट्रक्चर का मीन्स ये है कि जो साइलेंस हमारे बीच में क्रिएट हुआ है वो खत्म हो जाए, वो अपने जो वेस्ट और इंडिपेंडेंट वर्ल्ड से बाहर आते हुए हम एक रूफ में, एक ही घर में एक ऐसा घर शेयर करें जहाँ पे हम इमोशनल बॉन्ड से जुड़े हों, कनेक्टेड फील करें, एंड एक सॉरो से लेके एक न्यू लव, मतलब एक जो हमारी अभी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इमोशनल सपोर्ट जो नहीं है, ये सब हम रिमूव करके धीरे धीरे उस सॉरो से, उस सॉरोनेस से हम धीरे धीरे एक लव में कन्वर्ट कर पाए उस हाउस को। फादर एंड सन वी बोथ father and son, we both must live. Here he described that we both are connected by blood, and here is a relationship that they can't escape. वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकते, वो ऐसा एक रिलेशनशिप है, वो एक ऐसा ब्लड रिलेशनशिप है कि वो उससे बाहर नहीं आ सकते। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब and the same land. Here that particular relationship is that type of relationship that we can't escape. Still they share the same world, same environment, same globe, same roof, same earth, लेकिन still they are feeling emotional differences, emotional distance, and a lack of communication just because of generational gap. He speak, I can't understand, whatever he, here he means the child, here the child speak, father can't understand just because of generational gap. Myself, while anger grows from grief, we each put out an empty hand. Here he described myself why anger grows from grief, कि कैसे ये धीरे धीरे जो एंगर है वो कैसे दुख में बदलता जा रहा है, कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, जो चाइल्ड है अपनी इमोशन चीज नहीं बता पा रहा है इतना खुल के, तो जो उसका एंगर है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीफ में। जैसे सपोज दैट वी ऑल्सो फील सो मच हर्ट sometimes, and that thing we can't share with anyone, कि हम अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, हम फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वो एंगर जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दुख में, कि वी हैव नो वन टू शेयर दैट थिंग। सो यहाँ पे फादर भी बता रहे हैं कि वो खुद को ये देखते हैं कि उसके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है, वो मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता। We each put out an empty hand. We both want understanding. Here mainly he described that thing. They both want understanding. वो दोनों चाहते हैं कि वो एक दूसरे को समझें। Longing for something to forgive. And ये जो differences है इन सबको longing खत्म करते हुए वो एक ऐसा house create करें जिसमें एक दूसरे को समझ पाए, एक new love create हो जो sorrow से लेके उनको इसमें एक new love में convert हो, और ये सारी चीज़ें वो भूल जाएं, जो distance है उन दोनों के बीच में, emotional, generational है, communication है,
ये सब खत्म होके एक न्यू स्टेप ले, वो एक न्यू स्टेप लेते हुए, एक पुरानी सारी चीज़ों को ये भूलते हुए एक न्यू स्टेप ले कि जैसे वो बचपन में थे ऐसे एक बॉन्ड क्रिएट कर पाए. सो मेनली द होल पोएम is the relationship between father and son. Mainly this type of things we are facing always, मतलब in any generation. लाइक हम अभी जनरेशन में हम भी ये सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमको नहीं समझते हैं. जो मम्मी पापा थे वो अपने मम्मी पापा को, मीन्स दादा दादी को सोचते थे कि हमारे मम्मी पापा नहीं समझते. कि जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप, आप समझिए ना. लाइक अभी वो चलते हैं ना जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियम्स. तो एक पूरी जनरेशन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सराउंडिंग है, डेवलपमेंट है, जो अपब्रिंगिंग है, जो माइंडसेट है, वो हम दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा. सो वी बोथ वांट टू, तो हमें जनरली क्या करना चाहिए इन अ रियल लाइफ ऑल्सो. वी जस्ट, वो भी चाहते हैं कि हम उनको समझें और हम भी चाहते हैं कि वो हमको समझें. तो वी शुड टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप to share our thoughts and bring the emotional connection and try to build that emotional connection with each other. So here I think you all also apply the same thing in your houses. Maybe create some 5 to 10 minutes talk, some emotional talk, some little bit of their mentality talk, and then slowly share your mentality, your ideas. So वो धीरे धीरे वो भी समझेंगे और धीरे धीरे आप भी समझेंगे. तो यहाँ पे भी एलिजाबेथन ने यही बताया है, एक फीमेल ने, इवन फीमेल ने ये बताया है फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में. जनरली फादर डॉटर का रिलेशनशिप बहुत कॉमनली पॉपुलर है, बट यहाँ पे फादर सन की कैसे एक मेंटलिटी, एक जनरेशन गैप क्या क्या चीज़ें ला सकती है. तो यहाँ पे फादर भी चाह रहे हैं अच्छा रिलेशन एंड सन भी चाह रहे हैं. तो फादर ने अपनी पूरी डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि कैसे वो चाहते हैं कि उनका सन और उनका बॉन्ड जो है कैसे इम्प्रूव हो. So I hope you understand the poem very clearly. Now we move forward with our poetic devices. Poetic devices here is metaphor. Why metaphor? Here child and seed is metaphor. Why? Because when the unlike things compare with someone directly. Here सीड कंपेयर विथ लाइक, कि यहाँ पे सीड जो कंपेयर किए चाइल्ड से कंपेयर किया ना, कि कैसे वो एफर्ट्स, फादर अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस सीड, मतलब उस चाइल्ड में, उसको बड़ा करने के लिए. तो हियर मेटाफर इज आल्सो देयर. Alliteration, the repetition sound of s is here, so that's why here is alliteration. Consonant sound का repetition हो रहा है s sound का, so that's why alliteration. Symbolism is here. Seed symbols father's effort towards the son. यहाँ पे जो fathers के efforts है वो seed बता रही है. soak करना उसको, मतलब बढ़ाना, ये दोनों seed and soak दोनों words बता रहे हैं. तो here is symbolism also. Repetition, here the word I don't understand is repeated again and again. Here the I don't understand word is here repeated, so that's why the repetition is also there. And as before we discussed that the tone is sad, helpless, emotions, and so many other things also there. So these are the basically main parts of the poem, and the description we already discussed. So I hope you like the poem, and I hope you also want some good relationship between your father, your parents, your guardian, with your guardian. Okay, so okay, good day.